Namaste everybody. Today we are going to study one of the poem from your first flight book. That is your How to Tell Wild Animals. This poem has been composed by Caroline Wells. Caroline Wells was an American writer who was famous for books based on mystery. Her famous works are At the Shrine of the Sphinx 1896, The Jungle Book 1899, The Story of Betty 1899. Introduction of the poem. In the poem, the poet has explained the characteristics of the various wild animals in a very funny way. She has used languages in a way that it generates humor. She is introducing the reader to various kinds of wild animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, etc., explaining each of the animals in a very humorous way. Now we come to the poem. How to Tell Wild Animals poem. Explanation. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. Tawny, T-A-W-N, tawny. Tawny means yellowish brown color. The poet is telling the readers that how they can recognize various animals in the jungles of the east. So in the first stanza, she says that if the reader comes across an animal whose skin is yellowish brown in color, and if it roars at him so strongly that he can die out of fear, it means that he has encountered an Asian lion. This is the recognitions of the Asian lion. She has humorously explained the Asian lion which could kill a person with its roar. Literary device has been applied here. Rhyming scheme. ABA BCC is followed. Chance, advance, east, beast, dying, line, injunction. Continuation of a sentence to the next line, and if there tawny beast. Inversion, change in the format of a sentence. If there should to you advance. Inversion. Assurance, use of vowel sound. You, o, should, o, go, o, should, o, to, o, you, o, roars, o. Allusion, reference to a famous thing, place, a species of animal, etc. तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट कहता है कि आप कैसे एशियन लायन को पहचानेंगे कि अगर आप ईस्ट जाते हैं पूरब की तरफ अपने देश में और जंगल में, तो आपको अगर कहीं एक बहुत बड़ा जानवर मिल जाता है, येलोइश ब्राउन कलर उसके बॉडी पे होगा, उसका स्किन, और जोर जोर से चिंघार रहा हो और उसकी इस रोरिंग की साउंड से आपको लगा कि अब तो हम मर गए, तो समझ जाइएगा ये एशियन लायन है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड, सेकंड स्टेंजा, or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Noble means high born, aristocratic. A discern means D-I-S-C-E-R-N, means recognize. She explains an animal that roams in the jungle and belongs to a royal clan. वो यहाँ बताती है कि एक ऐसा जानवर जो जंगल में घूमता तो है लेकिन बड़ा ही रॉयल ग्रुप से आता है, वो राजकीय ग्रुप से आता है, राजशाही ग्रुप से. द कलर ऑफ इट्स स्किन इज येलोइश, इसके भी स्किन का कलर येलोइश.
with black stripe उसमें. She says that if you notice that he kills you and eats you up, और आपको ऐसा लगे कि वो आपको खा जाएगा, मार देगा, then it means that you have surely seen a Bengal tiger. तो आप समझ जाइएगा कि वो बंगाल टाइगर. This time also she has used dark humor to the explain. बहुत ही मजाकिया लहजे में उसने बताया है कि टाइगर लुक्स लाइक बिकॉज वंस अ पर्सन हैज बीन ईटन अप बाय वाइल्ड एनिमल देयर इज नो यूज इन डिटरमाइनिंग व्हिच वाइल्ड एनिमल इट इज. अगर एक आदमी मार दिया जाता है, कौन वाइल्ड एनिमल मारा उसको ये भी पता नहीं होता है. इसलिए पोएटिक यहाँ कहती है कवित्री कि कम से कम इतना तो पहचान लो कौन जानवर मेरा मुकाबला हो रहा है, फेस हो रहा है. In this stanza, literary device has been used. Rhyme scheme ABA BCC is followed. Round, ground, you learn diction. Alliteration, repetition of consonant sound. R at a start of two or more closely connected words. Roaming, round. Inversion, change in the format of sentence. The Bengal tiger to discern. Allusion, reference to a famous thing, place, species of animal, Bengal tiger, allusion. Assonance, use of vowel sound, O, or if sometime when roaming round. If strolling both, now next third stanza, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peeped, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. That will do no good to roar the pan. Tiger will do no good to roar the pan. He'll only lap and lap again. Stalling means walking casually. आराम से चलना घूमना. Fourth means forward आगे. Hide means skin of animal. HIDE. A peeped mean here it means the spots. उस पे spot रहता है धब्बा धब्बा जैसे इस टी शर्ट पे आप देखते हैं ब्लैक का ऐसे है उस ढंग से. A leapt means jump toward the someone, किसी के ऊपर jumping करना. The poet says that if you are casually walking in a jungle, you will meet an animal who has a skin with spots. जिसके skin पर spots हो. This animal is so fast और ये इतना तेज दौड़ता है. It will leap on you at once, which means that it will jump on you. इतना तेजी से आप समझ जाइए आपके ऊपर जंप कर जाएगा. दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट इट इज नन अदर देन द लेपर्ड. उसके स्पीड को और जंपिंग वे से आप समझिए लेपर्ड है. मोर एवर सी एड्स दैट इफ यू विल क्राई आउट इन पेन, अगर आप चिल्लाते हैं दर्द में, इट इज नॉट गोइंग टू बी एनी यूज, इट विल कीप यू ऑन जंपिंग ऑन यू. लेकिन आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपके ऊपर जंप करेगा. सो इन दिस स्टेंजा द पोएट हैज एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लेपर्ड. Literary device applied here. Rhyme scheme ABA BCC is followed. View, you, peeper, leopard, pen again. Alliteration, use of consonant sound H in the beginning of two words. He has. A poetic license has been applied also here. A liberty to the poet to change the spelling in order to create rhyme or rhythm in the poem. Use of left instead of लिफ्ट LEAPT, वहाँ लेफ्ट LEPT कर दिया है. तो राइट स्पेलिंग है LEAPT होना चाहिए, लेकिन उसने पोएट लिखा है LEPT जो होता नहीं है. तो पोएटिक लाइसेंस है, उसको लाइसेंस मिला हुआ है पोएट को कि वो स्पेलिंग के ऑर्डर को चेंज कर सकता है रिदम देने के लिए, राइम देने के लिए, उसके पास पावर रहता है. आप ये नहीं कह सकते गलत लिखा हुआ. रिपीटेशन, यूज ऑफ लेफ्ट word in the last line, repetitions. Assonance, use of vowel sound O, strolling में O, fourth O, you O, whose O, spot O, do O, no O, देखिए सब में O है, good O, roar O. Consonants, use of I sound. He will only lap. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. Yard मतलब हो गया backward or the lawn area of a house. A cares means a gentle touch.
इफ यू आर वॉकिंग इन द लोन एरिया ऑफ योर हाउस, अगर घर के आपके लोन एरिया में घूम रहे हैं और आपको एक जानवर से मुलाकात हो जाती है, क्रिएचर से, which hugs you tightly, you understand it is a bear, तब समझ जाना ये भालू है. She further adds that if you are still in doubt regarding the animal, the easiest way is that he will keep you hugging and touching you very gently. अगर आपको फिर भी डाउट है तो आकर के तुरंत कस के आपको पकड़ लेगा और गला मिलना शुरू कर देगा. This act of his will make you sure about its identity. You will come to know that it is a deer. Literary device. Rhyme scheme already ABA BCC is followed: yard, hard, there, beer, guess, cares. Enjambment, continuation of a sentence to the next line. If you are walking, creature, there. Alliteration, use of W sound when walking. Use of S sound, who, hugs. Use of B sound, be and beer. Assonance, use of E, meet, creature, and there. E sound is here. Next stanza. Though to distinguish beasts of prey a novice might none plus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smile, but if they weep, they are crocodiles. Distinguish means differentiate, अंतर बतलाना. A beast of prey means any animals that hunt other animals for food. एक जानवर जो दूसरे को मारने के लिए शिकार करता है. A novice, someone new to a job, NOVIC, novice, नौसिखुआ. A nonplus, NON PLUS, nonplus means be confused. Here the poet says that for someone who is new to the job of recognizing animals, अगर कोई आदमी जो नया है एनिमल पहचानने में अगर न्यू है, इट विल बी लाइक ए पजल टू रिकॉग्नाइज, उनके लिए एक पजल है. एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, एक जानवर जो दूसरे जानवर को हंट करता है फूड के लिए. सो हियर द पोएट ट्राइज टू हेल्प आउट द रीडर्स बाय टेलिंग द डिफरेंस बिटवीन टू एनिमल्स. एक ही जैसा दिखता है तो डिफरेंशिएट कर रहा है. सेज द hyena विल बी स्माइलिंग वेयर एज इट इज क्रोकोडाइल. अगर उस एक सेम जैसा मिले तो आप समझ जाइए, अगर कोई स्माइलिंग है तो हीना होगी, अगर वो रो रहा है समझ जाए क्रोकोडाइल है. इट इज ऑलवेज इन टीयर्स, बोथ ऑफ दीज एनिमल्स आर डेंजरस, लेकिन जो दोनों डेंजरस है. हियर लिटरेरी डिवाइसेस. राइम स्कीम एज यूजुअल ABA BCC. प्रे, मे, नन प्लस, दस, स्माइल्स, क्रोकोडाइल्स. Alliteration, use of consonant sound and novice, none plus, use of TS sound. Thus, enjambment, continuation of sentence to the next line through to distinguish might, none plus, the crocodile, hyena thus. Next stanza we come. The true chameleon is a small, a lizard sort of thing. He hasn't any tears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this is the chameleon you see. The poet says. The next is chameleon, which is a small creature. It looks like a lizard, but the difference between the two is that chameleon does not have ears and wings. Moreover, she says that chameleon has the ability to change its color according to the surface on which it is sitting. Therefore, if you see a tree and find nothing else on it, it must be a chameleon sitting on it. It has changed its colors into the color of tree. एक चमेलियन के बारे में बात हो रही है जिसे आप गिरगिट की तरह आप जानते हैं. तो गिरगिट का रंग बदलता है, ट्री पे जाएगा ट्री के जैसा हो जाएगा, ग्राउंड पे आएगा ग्राउंड के जैसा हो जाएगा. नाउ कम लिटरेरी डिवाइस इज हियर. राइम स्कीम ABA BCC is followed. A small all thing tree see. Alliteration, use of S sound, he hasn't, and consonants, use of G sound, single wing. So these are all about the explanation of this poem. In the next video, we'll explain the summary and the question answers also. That's all. Thank you. Have a nice day.